Are you still figuring out how to apply for the colleges and courses in Mumbai University? So guys, you have clicked on the right video because here we have made a step-by-step application जो आप देख के अपना जो course है और college है वो select कर सकते हो. Now, before I show you the step-by-step video, make sure guys that you watch the video till the end. I'm going to give you some more important information that is really crucial for Mumbai University admission. Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. Now, talking about the Mumbai University application, I hope आपने profile complete कर लिया होगा. That was the first step कि आपको register करना है. Now, there are a lot of mistakes. If you have done mistake, अब क्या करोगे? नाम में गड़बड़ हो गई है या 10वीं का result गलत डाल दिया. What could happen? Edit करने का option नहीं आ रहा है. So in that case, you will have to keep it as it is. हम वो बाद में rectify कर सकते हैं. But when you fill the college form, it is very important कि वहां पे आपसे कोई mistake ना हो, because वहां पे mistake मतलब आपका merit list disturb हो जाएगा. तो make sure करना कि आपका अगर कुछ mistake हो गया है तो 10 नया प्रोफाइल मत बनाओ. ऐसा हैंड होल्डिंग के टाइम हमारे पास एक बच्चा आया and he has made 7 new profile because उसका mistake हो रहा था. Sometime he was not able to understand कि मराठी में कैसे डालना है. दूसरी बार उसने क्या किया, गलत फाइल अपलोड हो गई सिग्नेचर की. सो उसने 6 प्रोफाइल क्रिएट कर दी. अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि 6 बार आपका अगर एबीसी आईडी कनेक्ट होता है, आपका आधार आईडी कनेक्ट होता है, देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज वो मल्टीपल आईडीज क्रिएट हो जाती है. तो वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है. अगर कुछ एरर हुआ है इट्स फाइन. अगर मेजर एरर नहीं है तो जो आपके डायरेक्टली मेरिट पे इंपैक्ट कर रहा है, दैट एरर यू हैव टू चेंज. कि आपने पूरा नाम ही गलत लिख दिया है, बट अगर आपका मराठी वाला जो नाम है, आपका एड्रेस में कुछ गलती हो गई है, आपके 10वीं के मार्क्स में आगे पीछे हो गया, दैट इज फाइन बिकॉज वो डायरेक्टली आपके मेरिट पे इंपैक्ट नहीं करे. आई होप दैट इज क्लियर. कुछ भी दूसरा डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ऑल्सो गाइज, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर पर्सनल वन-on-one कंसल्टेशन. दिस इज द QR कोड. स्कैन करके आप काउंसलिंग बुक कर सकते हो. ऑल्सो आई डू लॉट ऑफ लाइव वेबिनार, सेमिनार, फ्री सेशंस आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो टू क्लियर एवरीथिंग, ऑल द डाउट्स दैट यू हैव. नाउ सेकंड, क्या महाराष्ट्र CET के जो बच्चे हैं उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्टर करना है? इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, बट आपको मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि आपको जो है रजिस्टर नहीं करना है. अभी नहीं करोगे तो चलेगा, आपको सिर्फ प्रोफाइल चाहिए. आपका पूरा एप्लीकेशन CET के प्रोसेस से होगा और CET की जो रिजल्ट है वो आने वाली है जून में. अब आप डिसाइड करें कि आपको बैकअप लेना है नहीं लेना है. जो कोर्स है BCom मैनेजमेंट स्टडीज, वो एक सेफ्टी नेट है. बहुत से कॉलेजेस अभी दे रहे हैं. मिटी बाय NM जेवियर्स, आप सोचिए सारे कॉलेजेस हैं. UPG है, वो सब BCom मैनेजमेंट स्टडीज दे रहे हैं. आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हो, बट वही है कि सीट मत ब्लॉक करो अगर नहीं चाह रहे हो तो, क्योंकि जो बच्चे एक्चुअली में करना चाहते हैं वो फंस जाएंगे जिन्होंने CET नहीं दिया है. नाउ लेट्स वॉच द स्टेप बाय स्टेप वीडियो कि आपको कोर्स और जो कॉलेज है वो कैसे सिलेक्ट करना है. So we'll just do a quick demo of how do you apply to a particular program. Now that you have completed your profile, जब आपने profile बना लिया, you can just go select your respective program. Over here we'll select bachelor's. In case you want to go for say mass media, you'll select BAMMC. Select autonomous and non-autonomous as per the respective college. In case you don't get a college, you can look in both these options. Certain colleges are autonomous, certain are not. So please check in both options, all right? So we are checking the autonomous list right now, and there are 35 colleges which are autonomous. As per that, you can apply for whatever colleges you feel like you can apply for, right? There you go. So maybe if you want to apply for Mitibai as the first one, you put that. Maybe if you wanna put for UPG as second, you can put that. And in case you probably feel like you can apply for maybe your SIS as well, you can put that as third. You can have multiple options like this. Then you have to click on proceed. Moment you click on proceed, you can get your preferences over here. In case you want to move these preferences, you can click update button and change the preference order as well. Click next. Next. Tick all the eligibility criteria that you have read this and understood. Click your year of passing, institute, check your board, the division, select your percentage. Come to your standard 12 status. If you've still appeared or appearing
Have not got your mark sheet, select this. If you have already passed, select this. 2026, name of your institution, maybe if you're from this, select your board. This fine for the respective board. I'm just trying to look for the Maharashtra board. Maybe if you're from Maharashtra, you enter this. Again, the roll number, whatever roll number applies to you. Select your stream, division that you scored, final marks. Did you have maths, yes or no? Select accordingly. Subject combinations. This is just for a demonstration purpose, guys. Save and next. Select the eligibility criteria. It's clearly mentioned. Check once again if you're eligible. You can see a snapshot of the summary of your standard 10th, standard 12th. Click next. You can select the document that you uploaded. In case you need to upload standard 10th and 12th mark sheet, you need to do that relevant details accordingly. We'll just upload a sample one just for the demonstration purposes, guys. This is just for learning purposes that we're trying to upload this, right? So we'll just upload both of these. You can click the preview. This is how your form is going to look like for BMMC. Check all the details. Go to the bottom. There we will see your signature. Submit. Once you submit, you have to verify all your names and all the details are perfect. Please understand, once you tick, this is a disclaimer that in case of any issue that you do at your end, university is not at all liable for any of the problem that happens. Yeah. So in case if this is not correct, you can correct that. And if everything is in order, go ahead and submit the application. That's it. You can get a success message. Your application is submitted. Over here in the submitted application, you can see 3 applications which is submitted. Like write this. All right. BMMC Autonomous Institute, the form number. And in case you wish to add more options to this, you can click on add choice. More options can be further on added for the respective colleges. Yeah. That's how it is. And in case you want to print this form, just click on print form, take a download of the same and submit it to the relevant college programs or the college websites. नाउ गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स में क्लिक करके आपको अंडर ग्रेजुएट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है. तो 50 स्पेशलाइजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है. स्पेशलाइजेशन में अगर कंफ्यूजन है तो मैं वीडियोस या लाइव में आपको समझा दूंगी कि कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा रहेगा, सो दैट यू कैन पिक अकॉर्डिंगली. मैंने टॉप 10 कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया, आप वो देख लीजिएगा. ऑल्सो गाइज मेक श्योर कि आप जो है जब आप अप्लाई कर रहे हैं कॉलेजेस में, आप कॉलेजेस का पूरा नाम सही से चेक करें. ओके, रैंडमली स्मॉल फॉर्म में ना सर्च करें, वो नहीं मिलेगा. इवन फॉर प्रोग्राम्स यू हैव टू सर्च फॉर द फुल नेम, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो फाइनेंस डालो या अकाउंट डालो, कीवर्ड से सर्च करो, इट विल गेट थ्रू. ओके गाइज, आई होप दैट यू आर सॉर्टेड. एनी डाउट्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. विल ट्राई टू कम अप विद ऑल द वीडियोस and the content possible that can help you for your admission. For admission handholding, this is the QR code. You can scan and book it with my team. They will help you with the process. It's a paid service, but agar aapko chahiye, aap stuck ho, you can get it done from them. Also, you can follow Mumbai Colleges and Media Mentor on Instagram to get all the important updates. So guys, share this video with all your friends and stay tuned to Media Mentor and Mumbai Colleges to get all the important updates on your admissions 2026. And don't forget to like, share and subscribe.